इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको याद होगा इस गेट पर आप लंबी कतारें पहले देख रहे थे, लेकिन अब ये कतारें खत्म हो चुकी हैं। लोगों ने राष्ट्रपति भवन खाली कर दिया है। कुछ लोग और मौजूद हैं जो लगातार अब यहाँ पर इसे छोड़कर आगे निकल रहे हैं। दरअसल लोगों ने ये राष्ट्रपति भवन, साथ ही प्रधानमंत्री भवन और प्रधानमंत्री का दफ्तर यानी पीएमओ खाली करने का फैसला किया है, क्योंकि कल संसद भवन में बैठक होने वाली है। स्पीकर का अगला मूव क्या होता है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो है गोटबाया राजपक्षे, उनका इस्तीफा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन जहां पर ये जगह पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी, ये जगह अब खाली हो चुकी है और प्रदर्शनकारी अब इंतजार कर रहे हैं कि स्पीकर का अगला कदम क्या होता है। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि जो प्रेसिडेंट का सेक्रेटेरिएट है वहां पर ये तमाम प्रदर्शनकारी जुटेंगे और वहीं से आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। ये जो पूरा इलाका था पहले लोगों से घिरा हुआ था, आपको याद होगा राष्ट्रपति भवन का दरवाजा पहले खुला हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से ये बंद हो चुका है। यहाँ पर आर्मी का इन्फोर्समेंट आगे आप देख रहे हैं कर दिया गया है, आर्मी के जवान तैनात हैं और अब जो प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है वहां से ही आगे की रणनीति प्रदर्शनकारी तय करेंगे। लेकिन जिस जगह को इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद हासिल किया प्रदर्शनकारियों ने, उस जगह को अचानक खाली कर देने का फैसला क्या कुछ बड़ा करने की फिराक में है? यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्या जब संसद भवन में कल बैठक होगी तो उस दौरान कुछ हंगामा देखने को मिलेगा, प्रदर्शन देखने को मिलेगा? ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि रणनीति अब प्रदर्शनकारी आगे के हालात देखकर तय करेंगे। विजय अभय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोलंबो, श्रीलंका। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि राष्ट्रपति भवन कैसे खचाखच भरा हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति भवन को अब खाली कर दिया गया है। जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। हमारे साथ एक प्रोटेस्टर हैं। व्हाट्स योर नेम, मैडम? My name is Ravenna. You were protesting here. Why you're vacating the this president's palace? Right. So the president's palace has for years stood as a sanctuary or stood as a monument of history with so much, with showing so much power and force. On the 9th, when we overtook this presidential palace, we overtook it because we wanted to show the strength of the people, and we did. We were successful not only here but at several other locations in and around Colombo. All that was symbolic and significant because we saw the people come together and we saw them fighting together for one purpose. We are currently vacating this position because we are handing over this building that's a historic building to the people of Colombo. Vacating Prime Minister's office and Prime Minister's residence as well? Our Prime Minister's residence, we never occupy Prime Minister's residence. We are vacating his official residence in Temple Trees, yes. And we are leaving these places because we want to show it as a good sign of good faith. We came here, we did what we had to, and now we are leaving because we said we've accomplished what we want to accomplish, and now we are handing over the ball to the Rajapakses and the government to do what they need to and meet our demands as protesters. Rajpaksha has not resigned yet. He's still going to Singapore. He's planning to go to Saudi. What we have got to know from sources. So, are you going to rely on Vikram Singhe, or you want a different personality on that chair? Ranil Wickremesinghe came into parliament not as a representative of the people. He was not democratically voted in. He is not a representative of the people, and we do not accept him as an interim president or as the Prime Minister of Sri Lanka. What we want right now is an interim government with equal party representation to run this country, to take it out of this economic turmoil that the Rajapakses have put our country into. That is one of our demands as well. And we know that Gotabaya Rajapaksa won't resign because he's a coward. He wants to hold on to power. And unlike the Rajapakses, we have shown that when we promise something that we will leave, we will leave. Tell me one more thing. I have heard that you are giving just a 24 hours time to the speaker to decide something to, remove Rajpaksha from that president's chair. Are the protesters giving the government time, the speaker time to, take a different decision? That is what is happening? According to the constitution, if the president has not tendered his resignation in, we understand that President Wickremesinghe can be appointed as interim president. But at the same time, there is also a clause that says that he has vacated his post in a way. He is not in this country to give leadership or to ensure that the country is run in a stable manner. If he is incapable and incompetent of doing it, then it's our right as people of this country to know that he has left, and unfortunately he hasn't. Our protests will continue to go on until our demands have been met, and one of those demands is that regardless of whether the Rajapakses are in power or not, the wealth that they stole from us has to be given back to the people, because we as a country, we deserve so much more. As a nation, we did not have to default in our debt payments, and all that debt was an accumulation of what the Rajapakses did for 20-30 years, and that's all
it's a part of the lies and the web of lies that it has been fed to us as Sri Lankans, and we don't stand for it and we can't accept it. Your protest will continue on the secretariat. I have heard that also. That is true. It will. The secretariat will, and the Gotagama area there that we have set up at the Aragale site is a symbol. It's symbolic of what we have, and it's a symbolic gesture of what we will continue to do, because it is also set up as a warning for whoever comes into power next to know and understand that we won't be fed lies and we won't be silent if they continue to unjustly and illegally, without governance, rule up with our people. What will be your next move if the president doesn't resign, if the speaker doesn't take any action? Then what will be the next move for the protesters? What do you have decided for that? That will be in the hands of the people. There's 21 million people in this country, all seeking justice and all who want a change. As our people, we have done the most as we can, and now it is also up to the parliament and the opposition to take up the step and step up and be more loud in their demands and take action. Because as normal citizens, we do not know all the nooks and crannies or everything that is in the constitution, but people in power, in parliament, in opposition, they need to step up and take action. थैंक यू सो मच। तो ये आप सुन रहे थे एक प्रोटेस्टर को, जिसका साफ तौर पर ये कहना था कि उन्होंने अब राष्ट्रपति भवन भी खाली कर दिया है, प्रधानमंत्री आवास भी खाली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का दफ्तर भी खाली करेंगे। यहाँ पर ये जो दरवाजे पहले खुले हुआ करते थे, जिसमें लोग हुआ करते थे, ये पूरी तरह से अब बंद कर दिए गए हैं। लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है, अभी आपने सुना कि अपोजिशन को अब इसमें एक लीड रोल प्ले करना होगा। कल जो बैठक है उससे उम्मीद है इन लोगों को। इनका ये कहना है कि उस बैठक में एक बड़ा फैसला स्पीकर को लेना चाहिए, या यूं कहें कि जो विपक्ष है उससे अब खुलकर सामने आना होगा। लोगों ने अपना विरोध, अपना प्रतिशोध, अपना गुस्सा लंका के लोगों ने दिखा दिया है। उम्मीद उनको अब गवर्नमेंट से है, जो ऑल पार्टी मीटिंग है उससे है कहीं ना कहीं। तो साफ तौर पर लोगों ने यहाँ पर एक मौका दिया है अब गवर्नमेंट को, और क्या फैसले लिए जाते हैं स्पीकर की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में, कल जब संसद भवन में बैठक होती है, इस पर लोगों की निगाहें, प्रोटेस्टर्स की निगाहें टिकी हुई है। विजय अभय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, कोलंबो, श्रीलंका।